Cognitive Warfare Agency is launching a brainstorming session and discussion series for the women on the topic from computerization to artificial intelligence, recalling the approach of Shri Dattopant Thengadi Ji. कॉग्निटिव वॉरफेयर एजेंसी भारत की नारी शक्ति के बीच एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन और डिस्कशन सीरीज की शुरुआत कर रहा है, जिसका विषय है कंप्यूटरीकरण से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के दृष्टिकोण का पुनः स्मरण। टुगेदर वी विल रिकॉल द विजन एंड अप्रोच ऑफ श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, which he shared in the early days of computerization in his famous 1984 speech. यहाँ हम श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के दृष्टिकोण व मार्गदर्शन को पुनः स्मरण करते हुए आज की चुनौतियों और भविष्य के विकल्पों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारा दृढ़ विश्वास है कि सशक्त मातृशक्ति ही उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकती है और भारतवर्ष की नारी शक्ति में परिवार, समाज व राष्ट्र के साथ साथ विश्व को भी दिशा दिखाने की क्षमता है। हम सबकी परम वंदनीय और प्रेरणा स्रोत लक्ष्मीबाई केलकर जी, जिन्हें हम स्नेह से मौसी जी भी कहकर स्मरण करते हैं, उनका यह मानना था कि समाज का एक महत्वपूर्ण घटक होने के नाते स्त्री का परिवार निर्माण और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है। It is by remembering her words and by keeping the Shakti and Swaroop of Bharat Mata in our mind, we will begin our discussion and brainstorming session. But before that, let's have a quick introduction on CWA, the Cognitive Warfare Agency of Bharat, and the theme of our discussion. Cognitive Warfare Agency, CWA, is a virtual platform. With time, the impact of technological improvisations is becoming more significant. And India is participating in and celebrating this change. This platform is an attempt to present the 10th man view of technology improvisations. कॉग्निटिव वॉरफेयर एजेंसी भारत की एक आभासी संस्था। आइए अब हमारी आज की परिचर्चा व मंथन के विषय और थीम पर एक दृष्टि डालते हैं। Let's have a quick overview of our theme.